मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये इंग्लिश वालों के लिए बना दे रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए वैसे ही बना दूंगा मैं. यूटिलिटेरियनिज्म वॉज बेसिकली एन एथिकल थ्योरी. द ओरिजिनल बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वॉज हेडोनिज्म, a psychological theory. According to hedonism, the main aim of life is the achievement of maximum pleasure. According to this theory, the value of an act is to be assessed on the basis of pleasure and pain which it gives. The act which gives maximum pleasure is good, and the act which gives pain is bad. Therefore, the criteria of each act is pleasure and pain. The actions which cause pain would be avoided by the individual and the state, and the action which bring pleasure should be performed by the individual. The action which bring pleasure for the individual are useful, and those which bring pain to him are useless. क्योंकि मैंने जैसे तुम लोग को बताया कि थॉट जहाँ जैसे गांधी जी हैं, बेंथम है, मिल हीगल हैं, ग्रीन हैं, इसको ना ये ना पॉइंट वाइज नहीं होता, एंड समटाइम हिंदी इज़ वेरी टफ. तो मैं ऐसा इंग्लिश में दे दूंगा, इसको पूरा तुम लोग सुन लेना ठीक से. और इसमें कुछ लाइन्स अगर समझ में नहीं आए तो दिस इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ना, हिंदी के लिए भी दे दूंगा. ऐसा फिर मत सोचना कि इंग्लिश वालों को मैं पहले दे रहा हूँ, है ना. नो इल विल, ठीक है. इसको पॉइंट वाइज ऐसे आंसर को बनाना. बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म. द फर्स्ट सेटिंग वॉज मीनिंग ऑफ, ये जो मैंने पैरा बोला. The second is the form of utilitarianism and state. As a school of political thought, utilitarianism owes its origin to Jeremy Bentham, an English thinker of the 19th century. According to this theory, the government should promote the greatest good for the greatest numbers, or maximum welfare of maximum people. Jeremy Bentham and J.S. Mill were the main supporter of this theory. The utilitarians opposed the principle of natural rights and the theory of social contract. They said that the people created state for their own benefit. They were not prepared to accept the divine right concept of the state. The state is there because it is a useful institution. The basis of the function and rights of the states is maximum welfare of the maximum number. Which functions should or should not the state perform will be decided by the fact as to which functions guarantee the maximum welfare or the maximum number. The utilitarians were reformist. Therefore, they supported the interference of the state in the reforms of certain social evils and defective laws because it will ensure maximum welfare of the maximum people. Thus, they adopted a middle course between idealism and individualism. They were not in favor of idealism because it absorbs fully the individual's personality in the state, nor were they wholly in favor of individualism because according to it, the functions of the states are only protective. ठीक है. इट्स ऐसे टाइप. सो मैंने कहा कि इस पूरे आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, इंग्लिश मीडियम वालों, और उसके बीच में कोई लाइन समझ में नहीं आएगी तो देन यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन. नेक्स्ट, दो द अमेलगमेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड individualism was never complete, yet the utilitarians leaned towards individualism to a great extent. It was so because John Stuart Mill was both utilitarian and individualist. In its early stage, the nature of utilitarianism leaned towards the view that the society should be evaluated from the point of view of individual comfort. Besides, like individualists, the utilitarians were the supporters of private enterprise. है ना? Besides, like individualists, the utilitarians were supporters of private enterprise. They agreed that the maximum welfare of the individual is possible only when in the economical field the individual is left free. It means that the state should have minimum interference in his function.
The utilitarians, inspired by the feeling of the public welfare, organized campaign for improvement in public health, education and reforms in the systems of jails and administration. They were successful in their aim to great extent. The utilitarians wanted progress. Their aim was public welfare. They said that everything of the individual depends upon the organization and existence of the state. The aim of the law should be maximum welfare of the people. The existence of the state and other institutions depend upon their utility. इसके बाद एक हेडिंग आ जाएगी डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. तो देखो ये पता नहीं फॉर्मेट कैसा लगा तुमको. मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो कि जिनको मैं वैसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, है ना. मैं भी कोई एकदम बहुत कोई सुपर ट्रांसलेटर तो बिल्कुल नहीं हूँ, और कई बार तो थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेट करता हूँ ना, तो इसको नहीं कर पाऊँगा मैं. जो हिंदी की किताब मेरे पास है ना, तो इसको ज़रा तुम लोग देखो, इसको अगर इस पैटर्न में लिख सको और लिख करके वो 4-5-6 पन्ने के लायक मैटर बन जाए तो बताना, तो ऐसा और एक्सटेंड कर दूँगा, है ना. और ये भी ध्यान रखना कि क्लास में अगर मैं ऊपर नीचे हो भी रहा हूँ तो ये अब क्योंकि आई एम वेरी मच फ्री, बहुत फ्री हो गया हूँ, है ना. थोड़ा गाना वाना भी बहुत दिन से नहीं गाया, गाना भी गाना है मुझको, और ऐसे तुम लोगों को मैं लेक्चर दे दूँगा. तो आई वॉन्ट योर फीडबैक, है ना. आफ्टर वॉचिंग दी और आफ्टर लिसनिंग द ऑडियो टेल मी द फीडबैक. हिंदी वालों बस पीछे आप लोगों को भी दे रहा हूँ, ठीक है.